Welcome back to the third session. If I may request some of you to settle down so that we can start. Thank you for joining us back for the third session. The third session, the focus is on state legislatures. Very often, because Parliament is in Delhi, a lot of the public attention is only focused on the functioning of Parliament and what is happening in Parliament. And we forget that in India, there are 30 state legislatures. Last year, these 30 state legislatures passed more than 500 laws, and they oversaw a budget of about 53 lakh crores. So state legislatures occupy an extremely critical position in our democratic setup. Also because the subjects that these legislatures work on, health, education, law and order, agriculture, water, these are very connected to the people. So every year at the PRS annual conference, there is a session on state legislatures, and we are privileged to have three extremely distinguished speakers to talk about the subject of state legislatures and how to make them more effective. And I would request and invite on stage first the Speaker of the Bihar legislature, Mr. Nand Kishore Yadav. I was preparing the profile for Mr. Yadav, and I realized that he's occupied almost every position in the Bihar legislature. He started his career at the municipal level, and then when he came to the legislature, he's been a minister, he's been a member, he's been chairman of the Public Accounts Committee, he's been a leader of opposition. And in the last 35 years, he's now reached where he's the guardian of the Bihar legislature, one of the oldest legislatures in the country. Let me also invite Mr. Debabrata Saikia. Mr. Saikia is from the Assam legislature and the leader of the opposition there. And I'm worried because his rule book has more preparation than my notes. So we would love to hear his views about how the state legislature functions. And finally, Mr. Rohit Bohra from Rajasthan. He's one of the most active participants in the Rajasthan Legislative Assembly. If you are ever interested in the budgets of Rajasthan, he's the best person to go to because he studied them in depth. We'll start the session with a few opening remarks by the Bihar speaker. One of the, if you look at the statistic book that is in front of you that my colleague Niranjana and Atre have prepared, you would notice that one of the problems that we've been facing is that information availability on state legislatures has been very limited. And the Government of India, the Ministry of Parliamentary Affairs, has been working extensively to get state legislatures to come onto a common platform called NEVA and share a lot of their proceedings and how those and how the legislatures function. And perhaps as an initiative, it is unique because many other countries which have a federal and a state system do not have a similar platform. And we thought that you could share some of your insights about the functioning of NEVA, and then more importantly also about your career trajectory in the state legislature for the last 35, 40 years. आज
आपके इस कार्यक्रम में आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। यहाँ मंच पर विराजमान असम विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री देवव्रत सैकिया जी, राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्य श्री रोहित बोहरा जी और सबको इकट्ठा करने वाले माननीय श्री चक्षु राय जी। मित्रों, मुझे विधानसभा का अध्यक्ष बने बहुत कम दिन हुआ है। मैं 15 फरवरी 2024 को ही विधानसभा अध्यक्ष बना हूँ। वैसे मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, सच पूछिए तो सच यही है कि वो लोकतंत्र की जननी है दुनिया की। सबसे पहले अगर दुनिया में लोकतंत्र आया तो वैशाली जिले का वो लिच्छवी गणतंत्र था, और उसके बाद के लंबा इतिहास है, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे इस बात का गौरव प्राप्त है कि मैं ऐसे प्रदेश से आता हूँ जिस प्रदेश की बहुत गौरवशाली परंपरा भी रही है और गौरवशाली इतिहास उसका है। वैसे इस देश के अंदर किसी भी प्रांत का योगदान भारत के विकास में कम नहीं है, और हर प्रांत में कुछ न कुछ लोग ऐसे हुए रहे जिनके कारण भारत समृद्ध हुआ, भारत आगे बढ़ा, भारत की चर्चा हुई। लेकिन मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि जो 3 संप्रदाय हैं, धर्म संप्रदाय जिसको कह सकते हैं आप, उसका उद्भव बिहार से हुआ। भगवान बुद्ध को ज्ञान बिहार में प्राप्त हुआ। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर बिहार के ही थे, और गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्मस्थान भी बिहार है। और मुझे और सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उनके जन्म स्थान से ही लगातार विधायक हूँ। चाणक्य और चंद्रगुप्त भी बिहार के ही थे। तो उस प्रदेश से आज क्या धारणा आपके मन में, उसमें उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन ये भी याद रखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में ही है। तो जब मैं राजनीति में काम करने आया, संयोग से मेरे दोनों साथी जो बैठे हैं, दोनों को परिवार के लोग पहले राजनीति में थे, लेकिन मैं बिना राजनीति वाले परिवार का आदमी हूँ। मेरे परिवार में मेरे पहले कोई राजनीति में नहीं आया। तो मेरा एक स्वभाव है, जिस काम की जिम्मेवारी मुझे मिलती है मैं पूरी दक्षता और निष्ठा के साथ उस काम को पूरा करता हूँ। जो मेरे अंदर क्षमता है उसका पूरा उपयोग उस काम को सफल करने के लिए करता हूँ। और जब मुझे 15 फरवरी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया तो मैंने तय किया कि कुछ परिवर्तन दिखना चाहिए। और परिवर्तन तो दोनों प्रकार के होते हैं, नकारात्मक भी सकारात्मक भी। ये परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए। मैंने देखा कि आज का युग है, आज के युग के अनुसार अगर परिवर्तन नहीं किया मैंने तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। मैं देखता था कि आजकल तो हर व्यक्ति सोशल मीडिया जुड़ा है, नेट का इस्तेमाल करता है, तुरंत सूचनाएं प्राप्त करना चाहता है। तो मैंने उस दिशा में विचार करना शुरू किया और मैंने बिहार की विधानसभा को डिजिटल बनाने का तय किया। अपने सेक्रेटेरिएट को डिजिटल बनाने का काम सोचा। विधानसभा के अंदर कैसे सबको टैब दे सकें, हम उनकी सीट पर इसकी व्यवस्था कर सकें, वो करने का मैंने निर्णय लिया। तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अगले 20-21 जनवरी को जब लोकसभा के अध्यक्ष बिहार जाने वाले हैं, वहाँ देश भर के प्रिजाइडिंग अफसर का सम्मेलन होने वाला है। उस अवसर पर हम उसका उद्घाटन कराने वाले हैं, नेवा के माध्यम से जो काम होना है। तो मैंने देखा एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, एआई का मैंने इस्तेमाल देखा। अभी पार्लियामेंट के अंदर एक बैठक हम लोग की हुई थी, उसमें कितना लाभ उसका है वो मैंने साक्षात देखा। मैं वैसे ये अलग बात है, हर विषय का दोनों पहलू है, बता रहे थे राठौर जी। वो दोनों पहलू जो है तो निर्भर करता है कि व्यक्ति किस प्रकार से उसका इस्तेमाल करता है। हम निगेटिव क्यों सोचें, हम उसका जो पॉजिटिव पहलू है उसका विचार करके हम लोगों ने इसमें पहल किया है। और हमारा लक्ष्य भी है कि हम पूरे सेक्रेटेरिएट को तो कर ही देंगे, पूरी लाइब्रेरी को डिजिटल करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो लाइब्रेरी है बिहार विधानसभा की बहुत समृद्ध है। इतनी सारी पुस्तकें, इतने विषयों की पुस्तकें, तो सबको डिजिटल करने का विचार हम लोगों ने किया है। वैसे हमारी जो प्रोसीडिंग है वो 2016 के बाद से अब तक उसको हमने डाल दिया है, लेकिन उसके पहले का भी कर रहे हैं। तो मेरा लक्ष्य है कि बिहार विधानसभा भी, वैसे बहुत सारे विधानसभा में भी ये काम नहीं हुआ है, नेवा का या डिजिटलाइजेशन का काम नहीं हुआ है,
इन कुछ प्रदेशों ने किया है, हिमाचल ने किया है, बाकी और कुछ प्रदेशों ने किया है। तो 2025 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे और जब मैं उस पद को छोड़ूंगा, उसमें हमारा विधानसभा डिजिटल हो जाए पूरा, इसकी कोशिश हमारी है। मुझे लगता है कि मैं सफल होऊंगा। बाकी जो दूसरी बात कही चक्षु राय जी ने, बार बार कैसे जीत जाते हैं आप? बार बार जीतने का बहुत सारा कारण होता है। हम लोग के बिहार में कहते हैं ना लोग, आप लोग को मन में धारणा होती है जात पात ज़्यादा होता है। तो जात केवल चुनाव जीतने का आधार नहीं हो सकता है बार बार। मैं जिस कंस्टिट्यूंसी में चुनाव जीतता हूँ वहाँ मेरी जाति के केवल 35,000 लोग हैं, और 7वीं बार जब मैं जीता मुझे 98,000 वोट आया। जात कहाँ है? लेकिन आखिर जीतते क्यों हैं? एक बड़ा पहलू है। पहले के ज़माने में आप बड़े घर के आदमी हैं, आम आदमी, अरे बाप बड़े लोग हैं, इनको नहीं वोट देंगे तो किसको देंगे? आज ज़माना बदल गया। आज हर आदमी अपने जनप्रतिनिधि से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहता है। जब वो चाहे तो उपलब्ध हो विधायक, उसका सांसद उपलब्ध हो, ये आदमी का स्वभाव हो गया। मैं जब पहली बार जीता 95 में, मुझे 34% वोट आया। तो मैंने सोचा कि जीतने के बाद की तो कोई मतलब नहीं हुआ, इस जीत का कोई अर्थ नहीं है। जीत का अर्थ तो तब है जब 51% वोट आए, तब तो जीत का मजा है। तब तो कभी भी लड़ेंगे तो जीत सकते अगर 50% वोट आ जाए हमको। तो मैंने लक्ष्य तय किया अपना कि मैं 51% वोट ला करके चुनाव जीतूंगा। तो उसके लिए काम करना पड़ता है। तो मैंने सोचा, जो मैंने सोचा मैं बता रहा हूँ, अच्छा है कि बुरा है, गलत सही है, आप तय करो। तो मैंने सोचा कि साहब हर घर में मेरा फोटो होना, मैंने कम से कम 50% घरों में मेरा फोटो होना चाहिए। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मेरा कोई कैलेंडर लगाएगा, संभव नहीं था। यहाँ तो दिल्ली में कैलेंडर बांट देंगे तो चल जाता है, वहाँ तो संभव नहीं था। तो मैंने तय किया कि साहब मैं हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होऊंगा। ये आसान काम नहीं था। शादी में, श्राद्ध में, या कोई फंक्शन हो गया, जन्मदिन है, तो आदमी उस समय का फोटोग्राफ्स खींचता है अपने घर वाला लोग और एल्बम में रखता है। तो मैंने उसके बारे में सोचा कि उस माध्यम से मैं अपने घरों, सभी घरों में अपनी फ़ोटो पहुंचा सकता हूं। मैंने ये काम किया। मेरे लिए काम कठिन था। जब 95 में जीता तो मैं बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ, RSS का वर्कर हूँ। तो मैं उसमें बीजेपी के यूथ विंग का स्टेट प्रेसिडेंट था। तो मेरे पास तो पूरे बिहार का काम था, उसमें बिहार झारखंड एक था। तो मेरे लिए कठिन काम था। और विधायक बन गया तो उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी हो गया बीजेपी का। 95 में जीता तो जनरल सेक्रेटरी हो गया। 99 में मैं स्टेट प्रेसिडेंट हो गया बीजेपी बिहार का। और कठिन काम था मेरे लिए, कैसे घरों में जाऊँ। लेकिन मैंने तय किया कि मैं करूँगा इस काम को। और आप विश्वास नहीं करेंगे इतना लाभ उसका मिला मुझे, इतना लाभ मिला। अब कई बार बाहर के दौरे के कारण जा नहीं पाता था लोगों के यहाँ। तो मैंने तय किया कि मैं जिसके यहाँ नहीं जाऊँगा उसके यहाँ चिट्ठी भेजूँगा। तो मैंने वो पत्र भेजने का काम प्रारंभ किया। लेकिन अपनी ओर से कोशिश, एक दिन में 20-20, 22-22 जगह जाता था, तो मुझे उसका लाभ मिलता था। उससे लाभ मुझे क्या हुआ कि जाति के बंधन टूट गए और लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ अपने को कनेक्ट कर लिया। तो वो इतना बेहतर कनेक्शन था जो जब 2000 के चुनाव में लड़ने गया, दूसरी बार लड़ने गया, मुझे 51% से एबव वोट आया। कंस्टिट्यूंसी वही थी, कोई नया परिसीमन नहीं हुआ था, वोटर भी वही थे, तो मुझे उतना वोट आया। उसके पीछे 3 कारण और थे। मैं जब पहली बार चुनाव जीता तो मैं सामान्य परिवार से आता था, तो मेरे पिताजी को पैर छूने वाले की संख्या बढ़ गई। सामान्यतः जब सामान्य आदमी कोई बड़ा बन जाता है तो उसको लोग पैर छूते हैं, उसके परिवार के लोगों को। परिवार में पैसा नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया तो घर की भाषा में कहा, लगता है तुम्हारा भाव बढ़ गया है। हमें कहिए ना, आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने एक सूत्र कहा, बेटा याद रखना एक बात, चले चाल सादा निभे बाप दादा। हम लोग क्या एक कहावत है बिहार में, उसका अर्थ यही है कि आप जहाँ हो, जैसे हो, आज बड़े पद पर जाने के बाद भी बदलो नहीं, वैसे ही रहो। उसका अर्थ ये। तो मैंने अपने जीवन में इसको पूरी तरह से उतारने का काम किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो ताकत मिली है, पावर मिला है तुमको, इसका इस्तेमाल किसी को तंग करने के लिए मत करना। इसका इस्तेमाल दूसरे की भलाई के लिए करना। जितना कर सकते हो, सब कुछ नहीं कर सकते, जितना कर सकते हो करना। मैंने उसका भी पालन किया। मैंने उसका पालन इतने हद तक किया कि जिन लोगों ने मेरे विरोध में काम किया, मुझसे दुश्मनी रखते थे,
उनके खिलाफ भी पावर बनाने के बाद मैंने कोई खिलाफ में काम नहीं किया। उसका लाभ हुआ कि धीरे धीरे वो टूट के मेरे पास आने लगे। जब मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं उनका तो मेरे पास आए के बाद में। और तीसरा उनका, बेटा कोई भूखा घर में आ जाए तो खाना खिला देना। अब खाना खिलाने की तो सबको औकात नहीं, तो मैंने एक निर्णय लिया जरूर कि मेरे घर जो व्यक्ति आएगा, मैं रहूँ या ना रहूँ, उसको एक गिलास पानी, एक कप चाय जरूर दूंगा। वो मैंने पालन किया उसका। ये जो चले चाल साधा निभे बाप दादा का जो है ना, इसका लाभ क्या है सो मैं बताता हूँ। आप कल्पना करो, मैं 7 बार जीता हूँ, सब पदों पर रहा हूँ, जैसे बताया कशिश जी ने। लेकिन कंस्टिट्यूंसी में मुझे कोई विधायक जी नहीं कहता है, कोई मंत्री जी भी नहीं कहता है। सब कहते हैं नंदू जी, नंदू भैया, नंदू चाचा। अब उम्र हो गई है 72 साल, तो नंदू दादा कहने लगे लोग। तो ये कनेक्शन है, ये रिश्ता बन गया। और उस रिश्ते का परिणाम है कि 7 बार में से 5 बार मुझे 51% से अबव वोट आया। केवल 2 बार नहीं आया। एक बार पहली बार लड़ा तब 34% वोट आया, और एक बार 2015 में मुझे 47% वोट आया। लेकिन बाकी 5 चुनाव में मुझे 51% से अबव वोट आया। मुझे चिंता ही नहीं होती है, चुनाव जीतने की चिंता ही नहीं होती, भाई 51 तो नहीं आना है। उसका एक कारण और है, ये केवल इतना ही नहीं है, कनेक्शन नहीं है। तो हम पॉलिटिक्स करते हैं, हम जीते हुए हैं तो विरोधी पार्टी तो हमेशा इस बात का विचार करके उम्मीदवार खड़ा करेगी, इसका कौन सा वोट काटो ताकि इसको हराया जा सके। हर पार्टी ये रणनीति बनाती है। तो मैंने विचार किया, मैं शुरू के 10 साल विरोधी पार्टी में था, 2005 से लेकर या 1995 से 2005 तक तो मैं विरोध में था, सरकार दूसरी पार्टी की थी। तो मैंने विचार किया कि जिन लोगों ने इस बार वोट दिया है मुझे, अगले बार इसमें से 10% आदमी मुझे वोट नहीं देगा। मैंने मान लिया, क्योंकि कोई विधायक सबका काम नहीं कर सकता है। आम आदमी की जो आकांक्षा रहती है जिस प्रकार की, चाहे वो डेवलपमेंट की आकांक्षा हो, चाहे पर्सनल पैरवी की बात हो, ट्रांसफर पोस्टिंग, कई प्रकार के काम होते हैं। तो मैंने ये एसेस किया कि मुझे 10% आदमी वोट नहीं देगा। तो जीतने के 3 महीने बाद से ही मैंने एक प्लानिंग की कि जो वोट मुझे नहीं मिले उसमें से 15% वोट और कौन हो सकते हैं जो मुझे अगले चुनाव में मिल जाए। वो 15% वोट किसी जाति वर्ग के हो सकते हैं, किसी इलाके के हो सकते हैं, किसी और प्रकार के हो सकते हैं। उनका मैंने वर्गीकरण किया पूरा, और उसके हिसाब से फिर वहाँ कुछ विशेष काम, कुछ व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाना, कुछ डेवलपमेंट का काम करना, ये प्रयास मैंने किया। उसका लाभ होता है कि अगर पहले दिए गए वोट में से कुछ कमी भी हो गई तो जो नए वोट जोड़ने का अभियान मैंने प्रारंभ किया था उसमें से वोट प्लस हो गया। तो मुझे उसके कारण 51% उतना ही आ जाता है। सब लोग बार बार वोट नहीं देते, उसमें से कुछ लोग कम हो जाते हैं। नया जोड़ लेने के कारण मुझे उसका लाभ मिलता है कि मुझे नुकसान नहीं होता है, मैं फिर जीत जाता हूँ। दूसरा, आदमी का भरोसा होना चाहिए आप पर। आम आदमी, मेरे कंस्टिट्यूंसी के हर आदमी को इस बात का भरोसा है कि नंदू जी को कहेंगे तो हो जाएगा, नंदू जी को फ़ोन करेंगे तो अच्छा, एक बात और बताऊँ, मैं थोड़ा अलग किस्म का आदमी हूँ। विधायक के नाते जो मैंने मोबाइल लिया था, मैंने उसका नंबर कभी नहीं बदला। मैंने कुछ नए प्रयोग किए राजनीति में। मोबाइल फ़ोन अपने उठाना, थोड़ा सा आदमी जब नेता होता बन जाता है तो जानते हैं पिए हुए 2-4 ठो रहता है आसपास। मेरे पास भी रहता है, नहीं रहता ऐसा नहीं है, लेकिन मोबाइल अपने उठाना। हाँ, अगर किसी मीटिंग में बैठा हूँ तो स्वाभाविक है कि अपने नहीं उठा सकता, तो मेरा स्टाफ उठाता है और वो नोट करके रखता है किसका फ़ोन आया, और खाली होने के बाद मैं रिंग बैक करता हूँ। मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी के 12,000 लोगों के नंबर सेव किए। उनके फ़ोन जब आते थे मैं नाम से उनको पुकारता हूँ, हाँ रंजीत जी बोलिए क्या बात है। उस व्यक्ति को लगता है अरे विधायक जी मेरा नाम जानते हैं, अरे मंत्री जी मेरा नाम जानते हैं। इन सब कारणों से आदमी जुड़ता है, भरोसा करता है। और भरोसा तब करता है जब आप जो कहते हैं वो करिए। तब आप केवल झूठे वादे करके भाग जाएंगे तो आदमी का भरोसा नहीं हो सकता है। तो मुझे एक और बीमारी है, मैं खरी खरी बात बोलता हूँ। खरी मैंने गुस्से में नहीं बोलता, डांट के नहीं बोलता। कहता हूँ भाई देखो भैया ये काम हो नहीं सकता है, ये कठिनाई है। थोड़ा नाराज होता है शुरू में, लेकिन जब एहसास होता है कि नहीं ठीक कर रहे थे तो उसका विश्वास मेरे ऊपर बढ़ता है। भरोसा बनाना, आम आदमी से कनेक्ट होना, लोगों की भलाई के लिए काम करना, डेवलपमेंट के काम करना। जनता केवल एक चाहती यही है कि सुख दुख में विधायक साथ दे, डेवलपमेंट का काम करे। पैसा मांगने नहीं आता है कोई, खास करके मेरी कंस्टिट्यूंसी में तो समस्या ही नहीं है, पैसा नहीं मांगता है कोई।
लेकिन चाहता है आप साथ रहें, सुख दुख में साथ दो, विकास का काम करो और भरोसा बनाए रखो। ये एक बड़ा कारण है जो मुझे बार बार चुने जाने का अवसर मिला है। वैसे मैं राजनीति में बहुत लंबे समय से हूँ। जब जेपी मूवमेंट हुआ 74 में, मैं उसी समय सक्रिय हो गया था। मैं अपने इलाके का छात्र संघ समिति का अध्यक्ष था। 25 साल उम्र हमारी थी, उस समय तो कमी थी। और मैं तो 1.25 साल जेल में रहा, मिसा में, DIR में, 21 साल की उम्र में। और जब 25 साल का हुआ तो 78 में वार्ड काउंसलर हो गया, फिर 82 में डिप्टी मेयर बन गया। डिप्टी मेयर टॉस से बन गया, भाग भी कभी कभी साथ देता है। दोनों उम्मीदवार को बराबर इक्वल वोट आ गए, तो टॉस हुआ, मैं डिप्टी मेयर बन गया। तो जब भी कुछ बना तो मैंने परिश्रम की पराकाष्ठा की, उस पद के लिए अपने को योग्य बनाने का प्रयास किया, उस पद को समाज में ठीक ढंग से रखने के लिए जितने काम करने चाहिए वो करने की कोशिश की। तो उसका लाभ है कि आप कल्पना कर सकते हैं 1969 में मैं सामाजिक काम में लगा। जब मैं मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद आया 16 साल की उम्र में, मैं सामाजिक काम करता रहा। और 1969 से आज तक टिल टुडे बिना किसी जिम्मेवारी के मैं नहीं रहा हूँ। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना परिश्रम करता होगा, मैं इसका अंदाज कर सकते हैं आप। तो ये जो मैं जब विधायक रहता हूँ था, तो विधायक के नाते जनता के सवाल असेंबली में उठाना, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, ये सब का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ता है। और संक्षेप करता हूँ, जो बिल आते हैं या फिर और सरकारी काम, बजट आते हैं, तो क्या बोलना, केवल अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात उठाने से काम नहीं चलता है। अगर आपको बेहतर परफॉर्म करना है, पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। और ऐसे ऐसे विषय पर मैंने अपनी बात रखी है। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप मेरी किताब बुलंद आवाज़ पढ़िए। उस पुस्तक में कैसे एक विधायक, मैं उसमें नेता प्रतिपक्ष था, उसके भाषणों का संकलन है वो, तो कितना अध्ययन करना पड़ता है तब जाके परफॉर्म करता है आदमी। उस किताब का पढ़ेंगे तो आपको उसका अंदाज लगेगा, उसमें जो संदर्भ शब्द दिए गए उसके कारण से। तो मैं तो केवल इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ, मैं एक सामान्य घर में पैदा हुआ, आज भी सामान्य व्यक्ति ही हूँ। जब कुर्सी पर बैठता हूँ विधानसभा के अंदर तो विधानसभा अध्यक्ष का काम देखता हूँ, या मंत्री था तो मंत्री का काम देखता था। लेकिन जैसे ही कंस्टिट्यूंसी में जाता हूँ, घर से उतरता हूँ, एक बात और, मेरे यहाँ प्रतिदिन, मैं MLA था तो, विधायक था तो, मंत्री था तो, विधानसभा अध्यक्ष था तो, कभी भी मैं सुबह का 1 घंटा आम आदमी सुनता हूँ विदाउट अपॉइंटमेंट। ये मैंने एक बार रखा, उसका लाभ है। तो मैं कभी जिस पद पर भी कभी रहा तो 1 घंटा मिलने का काम मैंने अवश्य किया पटना में रहने पर, ताकि आम आदमी से मैं जुड़ा रहूँ। तो जो मैं हूँ सो मैंने बताया आपको, आपने अच्छा समझा बुरा समझा आप जानो, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, केवल विधायक के कारण नहीं, वो राजनीति में काम करने वाले लोगों के लिए नहीं, जीवन के जिस क्षेत्र में आप सब काम करते हो, अगर ये सूत्र आप ध्यान रखा कि जो काम मुझे मिला है पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, पूरी दक्षता के साथ मैं उसको पूरा करूँगा, उसके अनुरूप परिश्रम करिएगा, सफलता जरूर मिलेगी, मेरा ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ, आप स्पीकर साहब, आपकी व्यस्तता है तो मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछूंगा, और वो सवाल ये है कि 1 दशक पहले आप नेता प्रतिपक्ष थे, तो 10 साल पहले जो नेता प्रतिपक्ष ऐसा क्या सोचता था कि विधानसभा में क्या बदलाव होने चाहिए, तो अगर वो 10 साल पहले वाला नेता प्रतिपक्ष आज के अध्यक्ष से बात करे तो क्या कहेगा कि क्या विधानसभा में बदलाव आए? ये बदलाव तो आ गए। एक तो आपका सवाल थोड़ा अलग प्रकार का है, लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर विचार करेंगे आप, तो बिहार के बारे में जो छवि 2005 के पहले थी हमारी, उसका अंदाज आपको है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं उस विषय को टच भी नहीं करना चाहता। लेकिन जो लोग 2005 के पहले बिहार गए, अब ये बच्चे तो नहीं गए होंगे 2005 के पहले बिहार, लेकिन जो 2005 के पहले बिहार गए आप जैसे लोग, और अब बिहार आप जाके देखें तो क्या परिवर्तन हो सकता है, इसका अंदाज आपको लग सकता है। आप इतना ही अंदाज कर लीजिए कि बिहार में गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है।
तो गंगा नदी पर 2005 के पहले, आज़ादी के बाद से लेकर 2005 तक केवल 4 ब्रिजेज थे, और आज आप जाएंगे तो 16 ब्रिजेज बन रहे हैं। उसमें तो 12 काम कर रहे हैं और 4 बन रहे हैं। और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है, उस विभाग का मंत्री मुझे 8 साल तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बिहार में 4 लेन और 6 लेन सड़कें क्या होती है कोई नहीं जानता था, लेकिन आज आप जाएंगे तो हजारों किलोमीटर 4 लेन सड़क आपको दिखाई पड़ेंगे। उसका भी सौभाग्य मुझे प्राप्त है। नेता प्रतिपक्ष के नाते जो आप चर्चा कर रहे हैं, मैं अपने काम की बात करूंगा तो लंबा हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के नाते जो हमारी अपेक्षा होती थी सरकार से, तो मैं विधानसभा अध्यक्ष के नाते उसको पूरा एक्सिक्यूट कर रहा हूँ। पहले नेता प्रतिपक्ष था तो मैं ही हंगामा करता था, सदन डिस्टर्ब करता था। भाई जो बात है तो सच है, सच बोलने में क्या संकोच है। लेकिन आज मैं कोशिश करता हूँ कि सभी को समान अवसर दूँ। पहले हमारे माइक बंद हो जाते थे नेता प्रतिपक्ष के नाते, मैं विरोध करता ही था, लेकिन अभी जब मैं अध्यक्ष बना हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी का भी माइक बंद नहीं हो। लेकिन बिहार विधानसभा की जो कार्यसंचालन नियमावली है उसका पालन जरूर होना चाहिए। नियम के तहत कोई विषय उठाना चाहे उसको उठाने का पूरा अवसर देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। आप दिल्ली आए पटना से और हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी व्यस्तता है, मैं आपका और समय नहीं लेना चाहूँगा, तो अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं, बट अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप सैकिया साहब और मैं आप समय देते तो हम और बोलते रहते लेकिन सवाल है कि 2 अतिथि और आपके हैं, उनकी बात भी आपको सुननी, और मुझे भी एक कार्यक्रम, दूसरे कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी बात से अगर आपको कोई बात खराब लगी होगी तो आप उसको भूल जाइएगा, क्षमा करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलने वाला आदमी साफ बोलता हूँ। Mr. Saikia, you've been in the Assam legislature now for 15 years and have seen the Public Accounts Committee quite closely, and you've also, and now you have the task of representing and being the voice of the opposition. Over the last 15 years, how do you see the functioning of, and I wouldn't say just the Assam legislature, how do you see the functioning of state legislatures across the country? And what do you think are the opportunity areas where state legislatures either require strengthening or can do a better job as lawmaking institutions? Good morning, Saksuji and my colleague from Rajasthan and distinguished audience. I have been in the Assembly, Assam Assembly from 2011. This is my 3rd term. And last 10 years, it is the BJP and NDA party who is ruling in Assam. So my experience first 5 years was as a backbencher of the ruling party. Then many of my senior colleagues got defeated in 2016. And as such, I was from backbench, I have come to the first seat of the opposition. And many of my colleagues, later on when I met them, after my becoming leader of opposition, they asked me about so many things. And I told them that you people could not make it to the assembly, and so by providence, by luck, I have become the leader of opposition. And that is a fact. So it is difficult, particularly when you have a chief minister like Dr. Himanta Biswa Sarma, who was in Congress, who started his political career from Congress as the Youth Congress activist, and then for more than 13 years, he was the minister and maybe holding the de facto chief minister during the tenure of late Sri Tarun Gogoiji.
and then he switched sides in 2015, and he was the architect to bring BJP to power. So it is difficult to play the role of opposition when someone like Himanta is in power. And the functioning, yes, we personally, I find it very challenging, and the role which opposition should play in a parliament or assembly has decreased over the period. And I am facing that every day, because though it is said that the speaker is the guardian, he is our caretaker, father of the house and all that, it is the parliamentary department, parliamentary minister who sends the note for how many days the house should sit. And if there is no government business, they don't have any business to let us discuss public things. And in a week, we don't sit on Saturdays, so 5-day week. There are supposed to be 2 days for the private members, I mean opposition, Tuesday and Friday. But only 1 day we get the chance, because by some calculation they always make Saturday a government business day. They will say that we got some pending matters and all, so they eat our time, and we don't get much time to discuss public demand or scrutiny, the government business, etc., etc. So even of late, it was a convention in Assam that our assembly should sit for 3 times, once in January, February, or February, March, once in July, and another time winter in December. So as in the constitution, when Ambedkarji wrote it, he said that it should be not more than 6 months gap for each session. So the speaker, who is the chairman of Rules Committee, he formed a committee of officers, and these officers cited that role in the Article 171 or 172 of the Constitution, which says that the intervening period should not be 6 months. They have now cancelled our 3rd sitting. So a new rule has been framed that we will have only budget session and July session at 6 months interval. And that way also the role of opposition or functioning of the assembly has been reduced. And I will say more. Let us hear from Rajasthan. Saikia Saab. Rohit, if I may just ask you a question before, and then obviously you can add to that. One of the things that we've noticed at PRS is that the Rajasthan legislature has been at the forefront of passing some fairly unique legislation which has not been there in other states. So a right to health legislation was in your state legislature. The right for gig workers security was another legislation which was passed by your legislature. How do you view the legislative functioning, if I may say so, the debate and the discourse, not only in your legislature, but you've interacted and met with colleagues across the country. What is your view of how legislatures are functioning as far as lawmaking goes? Good afternoon, everybody. Saikia Saab, coordinator. See, what I want to say is, we have passed a lot of bills. But I'm sorry to say that we are not doing our job properly as legislators. You may feel this side that we are lawmakers. We are hardly lawmakers. We are just spending 29 days in the assembly. What are we? And what he said is, we are passing sometimes 5 bills in a day. Can you imagine this? We are not, see, and what happens is, when a bill comes, each party takes a position without realizing the fact
that this bill is being made for the society at large. Like only 2 bills have gone to the select committee as on date. I've just been at second time MLA. First was the right to health, where doctors were opposing that right to health bill. I was a member of that select committee. We sat across with a lot of doctors. Across the table, we had a lot of discussions. That was the first time I felt that, okay, you have to listen to the doctor fraternity at large, because they are the people who are more concerned about the health, because they are the real doers of it. And what difficulties they are finding in putting up this right to health. So there was a lot of discussion. We entered into a lot of heated discussion with them, because they were thinking only of them. They were not thinking of the society at large. Then we were telling them, Nahi, please don't do this, because they never wanted that the emergency should be there in each and every hospital. And we wanted as legislators, because if there is an accident, we wanted even the small hospitals. That was our thought process, that you should have an emergency there. Then we talked to the doctors. They told us, sir, we can't afford it. A small nursing home can't have an emergency. So we found out a way. Okay, then we told them, okay, you ring 108, you get the ambulance, you just give him a small whatever, so that he just saves his life, and you shift him to the other hospital. So these were some of the things which went into the system as such. And the second bill which has come to us is the Underground Water Board bill, which is still under discussion. I am also a part of that discussion. So I'm just telling you, we are not doing our job properly. I'm sorry to say that. And what I heard last time, this CPM, that we are spending 200 crores, 300 crores for an election. Are we buying votes, or we are living in the democracy? As students, you have to think over it. What are we doing? If we want to buy votes, then let's forget about democracy. Keep buying votes and keep winning the elections. Someone has to think about it. Someone has to write in the newspapers. See, what we call as Godi media, there's nothing in the newspapers against the system. What he rightly said was, our Home Minister has become the strategist. You keep buying MLAs for 20 crores, 30 crores, and keep filling their pockets, and they keep changing the parties. That is not what democracy is all about. We are not into a mature democracy. I think it's degradation. The kind of discussions that you want to have on the bills is not there. Actually, it is not there. As an MLA, I'll tell you very frankly, as an MLA, I was not very happy to become an MLA and see what was going on in the assembly. I always thought, you are sitting at the very high position, you are making those bills, you are talking on the bills. Half the people are not interested. They are not interested. And that's a fact. Because we are talking to you, because you will be the next citizens. You have to talk about this in the society. Just giving a vote once in 5 years, you are also not doing your job. That right to recall as an MLA or as an MP should be there. If we are not performing well, we should go out of the system. Why? Why shouldn't we go out of the system? And what he correctly said, what he correctly said, only development cannot make you win the election. And only caste votes cannot make you win the election. No. I'm telling you, as an MLA, you are continuously on the run. It is 24/7 job. Sometimes you receive a phone at 2:30 in the night. For that man, it's an emergency. For you, it's a sleeping time. For that man, it's an emergency because he has had an accident. The doctors are not there in the hospital. What does that man do? What the relatives of these people will do? So we are also doing these kind of odd jobs at 2:30 in the night, 3:30 in the morning. I'm not trying to boast myself. I don't even have a single vote of my own caste in my constituency. So what he said is, you have to be, during the
Marriage season, we sometimes even have to attend 50 marriages a day. We start at 8 o'clock in the morning and we finish at 9 in the night. 50 marriages. I've done 50 marriages and I continuously do 50 marriages every time when there are a lot of marriages on a single day. So it's not an easy job. If you take your job very seriously, I was a businessman. Because of my family legacy, I came into this political system. He was asking me a question, why did you get into this political system? I said, once you start helping your father, then it's a web. Actually, you get caught in that web. If you keep helping as a father, you are looking after the constituencies, then every person starts coming to you. He wants that his work has to be done. And you try and help them. Once you start trying to help them, then more people will always come forward to help, seek your help. So this is what the system is. And I'm very sorry to say, across the party line, no government is interested in the assembly should run for more days. There is a clear instruction from the government, please close the assembly. See, you've got 20-25 departments. Once the budget is put in, those for 25 departments, they have to be scrutinized. Every MLA should be able to speak on those departments. What does he want in his constituency? What is the development work he wants in the constituency? No assembly does it except for Chhattisgarh. We just have 8 days of demand. That shouldn't be there. It should be all the departments should be scrutinized. And I'm telling you about the committees. Except for PSC and PUC, no committee works. We just go there and sign the documents. So that shouldn't be there. Each committee, whatever the committee that you are talking about, there are hardly any committee meetings, serious committee meetings. There are 3-4 committees which work. Otherwise, everything is just farce that we are talking about. And I think all the assemblies should have now the environment committee. Because environment committee is a must for the future growth of this country. Without environment, cleaning of environment, you see what Delhi is. You have smog, you have everything, you are not able to come out of the house sometimes, your vehicles, you have odd, even number, whatever. There's a lot of issues here. And still, after Supreme Court intervening, still we are seeing these people are burning stubs. They're not using the correct method to do something, to remove it. And it is Delhi which is facing all this problem. The NCR, I would say, not Delhi alone. It is the NCR which is facing all these problems. So what are we doing? As parliamentarians, what are we doing? So all these things, when you see in this effect, I feel we should be more effective. And how we become more effective is by running of parliament. Parliament also, if you see, over a period of time, the days of parliament are decreasing every year. They're not increasing, they're decreasing. Because no government wants to be more accountable. So this is what I want you people, the next generation, to think about it. How you can make us more accountable. Not as a government alone, but also as legislators. So this is very important for us. We've got 10 minutes left, so I thought I'll just, ask very brief responses from the two of you on something, and then we can open it up to questions. Mr. Saikia, the question to the two of you is the same. If you had to give us 3 pointed recommendations of how to think about making state legislatures more effective, what would your top 3 recommendations be? First thing, I'd like to have more working days. We have only now maybe less than 30 days. So more working days is required. Number 2, all bills should be in public platform and they should be discussed before they being discussed in the assembly. And the third one, I think
The government has the responsibility to let the legislature do its job. So actually what happens during by-elections, our chief minister goes to the assembly areas to campaign. He says, what will you do by electing opposition MLAs? He will have to take tea with the speaker, and he will only sit with the speaker. If you elect the ruling party, they will be milking cows. They will give 17 liters of milk per day, and the opposition are like who do not give any milk. So if that type of attitude is on the ruling party, then people will also not support the opposition, and it will be the end of democracy. So the ruling party must honor the legislature, the opposition, and that we lack, as we all know, how parliament is running, how states are running, because when we passed anti-cow slaughter bill, that we wanted it to go to the select house, select committee, because the same bill was introduced in Assam in 1956. And without listening to our demand, as there were more than 100 amendments on the bill, Speaker allowed it, government said no, so bill was passed. And later, some other neighboring states like Nagaland, Meghalaya, they also said that we don't like the bill act which has been passed in Assam. Similar thing happened recently also. The government, as we all know, wants to make one nation, one law, and all one. So what happened, there was a traditional healing practices ban bill introduced in Assam. We again opposed it, as some of our people Assam is like mini India. People from central India like Jharkhand, Chhattisgarh were taken there by British, and they worship some trees and all, Karam Puja and all that. So tree worship, or Ahom people came to Assam in 1228 from central China and all that. So we also have slaughter of animals and all that. So this government wanted that traditional healing practices should be banned. That was again rejected by neighboring states, and we also wanted it to be not done, as it will hurt the tribal sentiments and all. But the government went ahead and passed the bill, and it has become an act now. So such things happen, and instead of giving solution, they create more problem. And this is done by the government with the intention of only keeping the people divided and all. So unless the government want the legislature, democracy cannot survive in India. Mr. Bohra, 3 recommendations for making legislatures more effective, and I hope you'll end on a positive note, because Mr. Saikia's... See, what I want is all the bills should go to the select committees. The select committees should discuss those bills threadbare. And both the parties, the opposition party and the ruling party, both members should be there equally. They should discuss it. Then they should have a consensus on the bill. Then it should come. Because it should benefit society at large. What's happening today is, whoever the ruling party is, they want to just throw their weight, and they want to get it passed because they've got the majority. That won't help. It won't help anyone. Because who are making these laws? These laws are made by the law secretary, by the concerned secretary. That's all. Our problem in this system is our educations with the politicians. You agree with me, I think. You agree with me that there is dearth of education in the political system. If you really want this democracy to become mature democracy, then there should be something about the education system with the politicians. This is really, I feel that
because then we can contribute lot towards these bills, and bills will affect, like you said, gig workers. Gig workers bill, we just passed it in a single day. How can we pass a gig worker bill in a single day? You tell me this. Because we were in majority, so we passed it. And you see, whatever the bills are, it is only the opposition members who are speaking in the bills. No one speaks from the ruling party for the bills, because they feel that our party is getting this bill, so we should be supporting this bill. We can always contribute. In the end, you may say, okay, you may pass, but we can always contribute in a positive manner. We can say, this is wrong, this is right, this should be adhered to, this should be the line of action. See, that all has to come up from the legislators as such. Why should opposition only oppose it, or why the ruling party should only support it? There has to be some system on that. This is what I feel. Another thing, that is, the committees should be becoming more effective. Why only the finance committees are effective? All committees in the legislatures should be effective, so it will benefit everyone. Then we can contribute a lot. So these are some things where we should have improvement. There is no doubt that day by day there is a lot of awakening amongst the MLAs for the development work. We are all more worried about the development in our constituencies than to making this policy matters. That's a fact. We are not interested in making policy. We're just worried about our constituency and how to win the next election. So that psyche has to go off. You have to contribute towards the policy making, and you have to have for development of the constituency. So you have to strike a balance between both of these. You can't just think only of the constituency, then you are losing out on making laws and passing those bills in the assembly. This is what I feel. You should always strike a balance on that. So this is my say on the Thank system. you. I would love to open the floor for questions, but you and your questions stand between you and lunch. So maybe what we can do is take maybe a question or two, and both Mr. Bohra and Mr. Saikia are here, and you'll get an opportunity to engage with them a little bit more. One question here. Yes, sir. My question to both the MLAs is that if the assembly, as you have mentioned, that sits for like 20 days or 30 days, what is an MLA doing for the rest of the days in a year? And the other thing is, that we have Lok Sabha or Sansad TV for the parliament. To the best of my knowledge, I don't think each state has their own channels where the proceedings are aired live. If it's not the case, then probably, if these things are aired, probably some sort of accountability may increase. So that's just a suggestion, and the first one is the question. In Rajasthan, all our speeches are on live. On WhatsApp, you can check every of our speech. So you can just go to our site and you can download whatever you want to download. So that is there already. We are live. All our speeches are live. That can always be done. Second thing that you asked was, what do you do for rest of the days? That's what I was trying to tell you. Attending marriages, going to all the deaths, then having to listen to people at least 3 to 4 hours a day whenever you are in the constituency, because we have to go for these committee meetings also. Committee meetings are doing 14 days of committee meeting, 10 days are for committee meetings. Whether you're working or you're not working, but you're going there. That is what I was trying to tell you, that we have to make these committees more vibrant. So we should not be just signing and coming back. This is what, except for the finance committees, rest of the people are doing this only. So this is what it is. Yeah.
We also have television, our own assembly television now, so everything is on live now. But when there is halla, they don't show the opposition benches. And so people miss what we do, only the ruling party things are displayed. And then secondly, yes, the committees are there, so they take tours. But like directive principles, the recommendations of the committee are not mandatory or not binding. So many things which all the committee members, because they are also like mini assembly with representative from all the political parties in those committees. They go visit, inspect things and recommend. But those governments, sometimes they take it up or sometimes they ignore them. And the other thing is, as he has also said, we have one MLA who publicly said that now he has become minister after his 4th term. Last 1 year he will be minister. What he does, he places 2 mobile phones on both sides of a cremation ground. So from his locality, his area, whoever will come, they give a click to the MLA, and then he visit the aggrieved family, to give them console the family and all. And that is what he was also saying. Like that, those are the things. And other things are everything, as he said, that people think that MLAs can do anything and everything, but that is not the fact. Our electorate has to be more literate and understand what actually he can do. But there is a twist also. The ruling party, chief minister, to promote and to attract more supporters to his fold, they give additional power to the ministers and MLAs and ruling party leaders in the opposition areas also. So the opposition legislators do not enjoy so much power as the ruling party MLAs do. And that is again negative side of the system. And we suffer that being in the opposition. Thank you. Thank you, Mr. Saikia. Thank you, Mr. Bohra, for your candid remarks. And that brings us to the end of the day. I'm so sorry. Both of them are here, and you'll get an opportunity to ask them at lunch your questions. Before we conclude the day's proceedings, I just wanted to thank all of you to take time out of your busy schedules to come and listen to some of our excellent speakers. I think what all the 3 sessions pointed out is that legislatures require a lot more strengthening. There is a lot more reform needed. As Mr. Bohra pointed out, engagement with legislatures should not be a one-time thing. When you go and vote for your elected representatives, it's a continuing engagement. And to carry that conversation forward and for you to get a little bit more insight into what the discussions are today, my colleagues have prepared excellent notes that I think you'll find useful. The note on discussing the state assemblies has been done by my colleague Shireen and Niranjana. Please speak to them. What is there in the note? They can share way more information than that. The note on anti-defection law was done by my colleague Tushar, who's somewhere there right at the back. Tushar, if you can raise your hand. If you want to know more about anti-defection law, he's the person that you should speak to. The note on strengthening parliament was done by Rutvik, and he has a wealth of data to share about what more can be done about the functioning of parliament. Thank you all for listening to us so patiently, and I now invite you to join us for lunch.